startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. What 3D printing really is. How would you actually explain it to a person who doesn't know anything about 3D printers? Yes, it won't be actually replacing the human factor. It will be just enhancing our ability to create. अच्छा, एक अगर 3D printed सर्विस की अगर मैं थोड़ी बात करूँ कि मेरे कोई कमर्शियली दोस्त कोई पूछ रहा है कि यार मुझे एक चीज़ कब बनाना है, तो मुझे पर क्यूबिक इंच या पर क्यूबिक फीट क्या कॉस्ट आती है? For example, if you would have used this wall of yours, so it would have been much easier. So for people who don't know, Plan 9 is an tech accelerator, जहाँ पे incubator and accelerator, जहाँ पे नए बिजनेस को वो कहते हैं कि आप आएँ हमारे साथ मिलकर स्टार्ट करें. पंजाब IT बोर्ड का एक प्रोग्राम है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद Allahwala है and we're back with another podcast after a very very long time. With a very dear friend and an amazing person running an amazing project for so long. एक तो पहले तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपको पहले नहीं बुलाया, लेकिन दूसरा ये है कि staying at what is a startup and then building it into a business and scaling it and then still doing it for so long, उसके बारे में एक तो अपडेट्स भी लेंगे, सीखेंगे भी कि कैसे शुरू किया, कैसा चल रहा है, क्या विजन है, एंड हाउ ही एक्चुअली वर्कड इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री. क्योंकि बहुत सारे हमने 2021 की हाइप देखी जिसमें लोगों ने बहुत सारे पैसे रेज़ किए, बहुत सारे बिजनेस शुरू हुए, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन उन्होंने सस्टेनेबली इतना लंबा हाइप के दौरान भी, इनकी अपनी इंडस्ट्री की हाइप के दौरान भी किस तरह सर्वाइव किया, एंड देन ही स्टिल गोइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अली भाई फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम. Sure, welcome. Oh, sorry. I'm grateful for inviting me over. अच्छा अली भाई, एक तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में सीखना है, but before we dive into that, I would like to learn a bit more about you. So where are you from? Where did you study? What's the backstory of Ali? So, I'm from Karachi, raised and born in Karachi, or I did my schooling from here, Karachi, mostly. बल्कि तकरीबन all this time I have been living in Gulshan Iqbal, or went to the school there. There was this primary school, secondary school, एक ही जगह से हमने किया in the neighborhood, and then college from government college, और इसके बाद then yes, I went to Sir Syed University for my bachelor's. I'm a computer engineering graduate, और वहीं से मतलब from there on we started 3D printing project और सारी चीज़ें, it all started from there. So you started, so when did you actually start this business? So ये पहले कोई पैशन प्रोजेक्ट था, क्या था? So yeah, it was mostly a passion project that actually we started as my second year project. So there was this hype, or there was this revolution, or I would say movement that was going on for maker movement जो कहलाती थी. So this was that time around 2012 and 13, उसके दरम्यान का टाइम है जब this movement was started, and we were following this through some hardware blogs internationally. ये movement उस वक्त चल रही थी, और there was this very famous magazine, Make magazine के नाम से. Then there was this hack कुछ करके एक प्रोजेक्ट था where they used to have these hardware projects. उसी वक्त Arduino लॉन्च हुआ, हार्डवेयर जो थी वो बहुत एक्सेसिबल होने लग गई. Arduino is the small computer, right? Yes, Arduino is the small computer. Majority Arduino और Raspberry Pi सेम है?
So Arduino is more like a very friendly programming environment. उसके बाद रास्पबेरी पाई आया है, और रास्पबेरी पाई इज बेसिकली based on the same processor but a different environment. It's Okay. more like a Linux based environment, a little bit कह लो कि more advanced. Arduino was microcontroller based, 8-bit सारी चीज़ें. But अगर if anyone remembers, इससे पहले you have to burn microchips. उसके लिए आपको एक अलग से बर्नर लेना पड़ता था, उसके जंपर्स लगाने पड़ते थे. इट वॉज अ वेरी अनटाइडी काइंड ऑफ प्रोसेस. आपको पता होगा. यस, बहुत ही मुश्किल किस्म का एक प्रोसेस होता था, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू वुड, इट वाज जस्ट लाइक अ सीडी बंद करते थे. तुमने सीडी बंद की है या वो भी नहीं किया? करिए तो करिए. सो इट वाज द सेम कह सकते हो कि प्रोसेस होता था somewhat. पायरेट करते थे हम. बट दिस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. मोस्टली हमारे यहाँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. देन आर्डिनो आया, उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की. दे मेड इट वेरी इजी, ठीक है, टू बिल्ड दीज प्रोग्राम्स. उनको माइक्रो कंट्रोलर से चलाएं, प्रोग्रामिंग करें एंड एवरीथिंग. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज दिस थिंग के यार ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर आ गए, अब उनको रोबोटिक्स बनाए, मैकेनिज़्म बनाए. देर वॉज दिस थिंग के 3D प्रिंटर्स जो हैं दे स्टार्टेड अपेयरिंग एज प्रोजेक्ट्स. हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, DIY प्रोजेक्ट्स से दे स्टार्टेड अपेयरिंग. उनकी बहुत ही बेसिक फॉर्म में अवेलेबल होने शुरू हुए. तो वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट. बल्कि वी क्या है, स्टार्टेड फॉलोइंग. तो कमर्शियली नहीं आने शुरू हुए थे? नो, एब्सोल्युटली नॉट. उस वक्त देर वॉज हार्डली एनी कमर्शियल 3D प्रिंटर, बल्कि कंज्यूमर ग्रेड. पाकिस्तान से हट के भी नहीं, पाकिस्तान से हट के भी बिल्कुल. सो दिस वॉज अ टाइम वेयर देर वॉज जस्ट अ ग्रुप. एक IRC का ग्रुप था that we were a part of. It is known as RepRap. That was later got to be known as RepRap. We were a part of it. बहुत initial days में hardly there were any commercial consumer grade printers available. उस वक्त बहुत ही DIY किस्म की प्रोजेक्ट्स होते थे, जो आप नेट बोल्ड्स जोड़ के क्या कहेंगे, बहुत ही बेसिक किस्म की हार्डवेयर जो हार्डवेयर स्टोर से मिल रही है वो जोड़ के आप कोई मशीन उसका फ्रेम बनाते थे. फिर उसको सम काइंड ऑफ बेल्ट्स और मोशन उनसे यूज़ करके समथिंग you won't believe that was a 3D printer at that time. So that was the thing. This is where it all began. That was probably my second year, जहाँ से I started getting detached from my engineering program and completely getting devoted to what I was doing here. मगर डिग्री पूरी कर ली थी? हाँ, वो सर सैयद थी इसलिए हो गई. और कहीं नहीं होती? नहीं. तो in that case that's the entire thing. This is where the things began. इस वक्त then there was hardly हमारे यहाँ भी एक तो 3D printers नहीं थे, but then there was this thing के entrepreneurship और startups का culture शायद पहली दफ़ा introduce होने लगा था. हाँ, it is 9 years ago. Around 8-9 years ago, yes. हाँ, उन्हीं दोनों वो भी खुला था ना आपका, .0 खुला था, फिर उसके 1-2 साल बाद नेस्ट आयो और इन सब. अच्छा, .0 was there already. इससे पहले दिस प्रोग्राम वॉज लेड बाय उमर साहब एंड प्लान 9 के नाम से. उमर साहब बाद में आए थे. इनिशियली दिस वाज PITB जिसने स्टार्ट किया था, और आई वाज इन माय सेकेंड ईयर जब मैंने प्लान 9 का जो फर्स्ट कोहोर्ट था उसके लिए अप्लाई किया था. एंड ऑब्वियसली वी वर रिजेक्टेड, बट द रीज़न दे गेव अस दैट वाज very motivating. उनको they had no idea that it was something like that. हम बड़े motivate हुए क्योंकि what they said कि what you are telling, a machine that can actually produce these parts or everything, that is too good to be true. It is not possible. अच्छा, yes. Landline ने भी कहा? Yes. और the kind of people that were judges there and they are still here. और नाम नहीं लेने. Yes, no name, yes, पर
this is one thing that actually I found very motivating, क्योंकि मुझे I had a complete idea of the work of the thing that we were doing and how possible it was. So this was the beginning. We didn't get into the cohort at that time, but maybe 2 years later when we were done this कोड 4-5 हुआ ना? yeah, मेरे ख्याल से 4 था. I'm not exactly sure about it, but we had done the 3D printer. The first prototype was done. It was, I think, the first or second. I don't really care about it. Pakistan में तो was the 3D printer. और but after we had done the entire thing, FYP हो गया, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट हो गया, ग्रेजुएशन के बाद सारी चीज़ें, then we applied again there. क्योंकि एक डायरेक्शन मुझे नज़र आ गई थी कि what we can do with this machine and क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. I had a good background to assess the market और सारी चीज़ें. तो in that case we applied again, and this time there was no assessment. They just we just told them we were here and this is the project 2 years back. Wow. And there was absolutely no assessment. They told us, okay, you are going to Lahore for incubation and everything. So बस वहाँ से फिर business वाली journey का start है, and that has been a very different ride. That has been up and down and everything, but yes, that's one thing that we have been very consistent in a belief that this is one of the most important markets or technologies for the future. For sure. So for people who don't know, Plan 9 is an tech accelerator, जहाँ पे incubator and accelerator, जहाँ पे नए business को वो कहते हैं कि आप आएँ हमारे साथ मिलकर start करें. पंजाब IT बोर्ड का एक प्रोग्राम है, and initially सबसे पहला I think वही था ना पाकिस्तान. Yes, they are the first. I think the first that actually got all the hype. हाँ, maybe से पहले शायद कुछ और भी थे, but they were actually the first ones. First to get the hype, and then there's Nest.io, and then yes, we see everything else popping up. Now there's like more than 80-90 incubators that I know. NIT भी national इसका है, पंजाब IT बोर्ड ने कराची तक में खोले हुए हैं, NIC अलग हैं. There's phenomenal work that's going on. दुरसल KP में है. तो अच्छा, just coming back to PITB, आपके बैच में और कौन कौन था? हसन भाई भी आपके प्रोग्राम में थे, आपके कोहॉर्ट में थे? Hassan from Tracks, he also went to PITB, no? He went to their, I think, I'm not exactly sure, but he went to their accelerator program. Maybe. I'm not exactly sure. You went to the incubation program? Yes, we went to the incubation program that was in Lahore. Then we went back to Karachi. और फिर वहाँ we actually started building the business and startup from here. मगर जैसे बहुत सारे उन दिनों के प्रोग्राम के लोगों को तो मैं जानता हूँ जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं. Yes, so one of them is, I think, BookMe was the senior ones. They were a part of Plan 9 and then Plan X, जो accelerator program था उनका एक साल अर्ली, मेरे ख्याल से उससे एक पहले का उनका कोड था. From there on, there have been quite a few of these businesses जो कि that surface. I think Patari came immediately after us, or yes, there were quite a few of them जो Plan 9 से निकले और फिर then got on the mainstream. So okay, so now let's go to what 3D printing really is. How would you actually explain it to a person who doesn't know anything about 3D printers? Yes. Or briefly, तो आपको 30 seconds है. Yeah, so if you have used a laser printer or a printer, inkjet printer at your home or your office, आप उसको कोई भी image देते हैं या text देते हैं, that actually prints it on a paper. Similarly, a 3D printer, you send a file to the 3D printer, but it will actually form a physical, tangible object out of it. यानी कि जैसे मेरे
अब्बू डिफाइन करते हैं। आप प्रिंटर को एक फिजिकल इसकी तस्वीर देंगे कप की, ये आपको कप बना के दे देगा इन द लेटेस्ट। और अब तो हो भी जाता है ये पिक्चर के साथ, है ना? अब तो लाइडार आ गया फोन में। तो दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। I downloaded this app, Yeah. and then it made 3D faces of so many objects. It was actually scary कि हमारे फोन में हम लोग लेके घूम रहे हैं, Yes. और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। So you can actually use this LiDAR to scan an object and have it printed in less than a day. It will be less than a day, तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया, maybe 3 to 4 hours, that's it. It will be available to you in your hands. And definitely it is improving और सारी चीज़ें। ऐसे मैंने बनाया हुआ है, इसका थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, मैंने बहुत एक्यूरेट नहीं लाइटिंग, लेकिन Yes. So there are things जो conditions हैं actually, इसमें background वगैरह भी साथ आ रहा है, सारी चीज़ें। तो वो सब तो हम काट नहीं सकते। For example, if you would have used this wall of yours, so it would have been much easier. नहीं, ये तो मैंने घर में ऐसे बैठा हुआ टेस्टिंग कर रहा था ना, क्योंकि इसमें पीछे टेक्सचर भी उठाया हुआ है सारा। तो if it was यहाँ पे वैसे ट्राई करते हैं आपकी शक्ल का एक। आपने अपनी शक्ल वैसे भी प्रिंट करी है? Actually not, but I have और ही करी है। हाँ, I have printed another colleague. He was a very young colleague that we had at our office. A very young boy who just came from a honor से वो आए थे डिप्लोमा करके, and he was the most keen guy. He wanted to try 3D scanning and everything, so he scanned himself and had it printed. वो आज भी हमारे जो printed objects वाला showcase है उस पे पड़ा हुआ है। अल्लाह। और obviously we haven't forgotten it. नहीं, अच्छा है। अपने जो चेयरमैन है उनको आप पिक्चर आराम से उनकी बर्थडे का गिफ्ट अच्छा भेज सकते हैं आप। Definitely we won't do that. मतलब दैट्स फाइन कि हम उन्हें को देख लेते हैं, दैट्स हर वक्त सामने होंगे ना आप, इसलिए पिन नहीं रखना। देख रहा हूँ तुम्हारे वक्त। तो दैट्स 3D printing. Now what's your business model? So you guys, when I came to your factory, it was like 2, 3, maybe 4 years ago, maybe 3 years ago. 2 years ago. That was 2 years. कोविड के फौरी बाद, कोविड से फौरी पहले नहीं आया था? नहीं, बाद में। That was 2020. Okay, yes. तो कॉन्फ्रेंस के बाद में अर्जिश के साथ था। Okay. तो उन दिनों आपने अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट आपका रेडी था और आप बेच भी रहे थे। Yes. उन दिनों तो 80,000 रुपये का आई थिंक बेच रहे थे। तो what's the price point that your consumer 3D printer is at? If someone's interested in buying, yes, हम पब्लिकली ऐसे बोल सकते हैं? Yeah, definitely. अभी तक लॉज वॉज का हो गया मसला सॉल्व? नहीं, कोई मसला सॉल्व नहीं है। We are just terribly brave. तो what is a price point and why should someone think about actually buying a 3D printer? हमारे जैसे पागल तो कम होते हैं, उनको थोड़ा सा इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो क्या करें? So at the moment that our base model or the one we offer to the engineers and hobbyists and professionals, everyone, it's available for 1,05,000 रुपये बस। Yes, बस। So we are making sure that inflation से आपने कुछ नहीं? We are making sure that the printer is accessible to majority of the consumers. We obviously inflation के effects सारे हैं and there is a continuous discussion about it, but we are trying to keep it accessible क्योंकि that's the entire objective of the project. Keeping the ऐसी आपने किस तरह अपना प्लगइन डाला है? ऐसी आपने किस तरह अपना प्लगइन डाला है? Yes. So in that case, the 3D printer, if you want to, the best thing, if you remember, I still remember how it was for me. If you have actually played, आपको Legos खेलने का मौका मिला हो in your childhood, तो अभी भी खेलते हैं? Yes, we still do that. Even I do that. But the thing being, they are very simple bricks. But when you start building something out of those bricks, right, your mind starts opening up. ऐसे ही? You start seeing the possibilities. ठीक है? Similarly, the first time
you will have a 3D print जो आपने खुद डिज़ाइन किया है. Mostly you can actually download something or have it printed. The first time you will have that physical model printed on your desk in your hand. An entire world of possibilities will open in your mind. It does. And exactly this is what we do. We want for this nation, for the kids and very much everyone. क्योंकि हमारे यहाँ एक we have seen that there is an internationally a culture है making things DIY and everything, but we have actually lacked that. कुछ जगहों पे we would say कि in my case मैं तो ज़रूर हर दफ़ा ये कहता हूँ कि we were privileged, ठीक है, कि we had access to Legos and everything thanks to our parents, but not everyone is that kind of privileged. So obviously this is something that the nation उसकी तरफ ले जाना हम चाह रहे हैं कि they start using these 3D printers, their mind starts opening and they start thinking about solving problems. And that's very the true. moment you start designing something या आपको idea होता है कि यार this thing can be done, ये possible है, then सारी problems you start thinking or seeing things very differently. Right. That's the major thing. No, that's very true. And especially with such an opportunity full country like ours, so many problems and opportunities. जब मैंने पहली बार 3D प्रिंटर के बारे में सीखा था, मैं सबसे पहले मैं कोविड में जब बंद था दुबई में, तो मैं चाइना से मंगाया था एक. तो वही है जो मैं आपको भेजने वाला था कि ख़राब हो गया है. तो उससे ना अभी तक आज तक मैंने उसको सही फंक्शनली नहीं चलाया. लेकिन मैंने उससे 3-4 वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ज़रूर बनवाई थी जो बीच में से टूट गई, क्योंकि वो मैंने क्या ख़राब किया क्या नहीं किया. बट वो आज तक एक तो मेरे पास रखा हुआ है. दूसरा ये है कि एनीथिंग लाइक द होल पर्सपेक्टिव ऑफ the way we actually see our problems. I mean, अगर हम लोग अभी घर सीधे बनाते हैं तो why do we really need to make our houses straight? हमारे एक दरख्त के अराउंड भी बन सकता है, वो कर्व में बन सकता है. फिर उन्हीं दिनों मैंने वीडियो देखी, वो जो रशिया में एक 3D प्रिंटर किसी ने बनाया, कंक्रीट के डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो और एक किसी 24 घंटे में उसने घर बना दिया. तो आप लोग वैसे 3D प्रिंटर कंक्रीट वाले पे काम किए हैं अभी तक? So we have done our R&D projects and everything. We have tried too many things in that case, or concrete printers and everything. But obviously कुछ जगहों पे we have to think commercially also. So not every project gets immediately to commercial levels और सारी चीज़ें. But yes, we have done R&Ds or we have done R&D projects. कंक्रीट पे हाउसेज हो गए, देन दे आर फाइबर इनफोर्स्ड और सारी चीज़ें. सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल थिंग्स वी हैव डन. दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ OBJEXYZ के एक्सप्लोर 3D प्रिंटिंग, see what's all the possibilities. So what kind of different products? तो एक तो कंज्यूमर 3D प्रिंटर के बारे में बात कर लिया, आप लोग बहुत सारी और चीज़ें ऑफर करते हैं, वो क्या क्या हैं और किस तरह के और प्रोडक्ट्स हैं, क्या है? So we have like 2-3 मॉडल्स जो कंज्यूमर्स को रेडीली अवेलेबल हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ग्रेड्स एंड कैपेबिलिटीज. देयर इज दिस द मॉडल दैट आई टोल्ड यू अबाउट 1,05,000 का. देन वी हैव अ लार्जर मॉडल दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, जहाँ पे फॉर हाई टेम्परेचर पॉसिबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल वगैरह में. वहाँ के लिए कुछ एक प्रोडक्ट है दैट इज़ अराउंड, उसका साइज़ भी है 16 by 12 by 12 इंचेस. अच्छा. लार्जर बिल्ड एरिया. 16 by 12 by 12 का वो बना सकता है? यस, इट कैन. उसका अपना साइज़ तो बड़ा होगा? यस, डेफिनेटली उसका काफ़ी बड़ा है. इट इज़ एन enclosed machine और मोस्टली फॉर द प्रोफेशनल मार्केट, एंड करेंटली इट इज़ बीइंग यूज्ड इन लाइक 15-20 of the universities, national universities में यूज़ हो रहा है. then our aerospace and government military industries तकरीबन is सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है इस वक्त मार्केट में in terms of industries में. it's a professional model. और
then we have a very smaller version that's specifically, we haven't actually launched it for the consumers yet, but that's specifically for STEM schools, universities, schools वगैरह बच्चों के लिए. It is relatively smaller, less bells and whistles, but obviously to make things more accessible. मेरे जैसे बंदे के लिए वो है. नहीं, तुम्हारे लिए हमने इंडस्ट्रियल वाला रखा है. वो देख ले मेरे में वो चला नहीं मुझसे, कंज्यूमर वाला आपका इंडस्ट्रियल वाला. When I came to your factory, I saw a very, very large one. Yes, that's mostly. Then we have our services, जहाँ पे we are very much like a full service bureau for low volume production, 3D printing वगैरह के लिए. So if you have something, you have an idea, you can just come to us for product development. We will develop your prototype, have it finished just like a final product, and if you want a low volume production of it, we are available for that. So जैसे आप बता रहे हो very large machine, we have a few machines that can print up to 1 meter, 1 meter by 1 meter, 1 by 1 meter. So they are mostly for the internal services and सारी चीज़ों के लिए. And तो क्या एक एप्लीकेशन हो सकती है? चले कुर्सी के अलावा हम क्या और ऐसा है जो कोई बंदा सोच रहा है कि मैं बना सकता हूँ तो बनाऊँ? Yes. So one of our clients actually use those machines to make RC planes. That actually helps him build the entire structure, और उसके ऊपर फिर वो fiber reinforce करके that is now actually RC plane. And आप उसको कह सकते हैं they actually manufacture their drones and everything on those machines now. Wow. बजाय ये कि हाथ से उसको स्कल्प करें और सारी चीज़ें उसकी डाइज वगैरह बनाएं, they just use a 3D printer. डाई बनाने के लिए भी आपको इस्तेमाल इसकी? Yes. So you can just simply make dies and molds out of these. फाइबर ग्लास हो गई, कार्बन फाइबर हो गई, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की जो डाइज हैं, यू डोंट रियली नीड टू मैन्युफैक्चर देम नाउ फॉर अ सेपरेट प्रोजेक्ट. यू कैन जस्ट 3D print it. In most of the cases, you can just print it in a high temperature material and can use it in your vehicle or anything you want. और उसको ज़्यादा strength देना चाह रहे हैं तो you can use some additional fiber, carbon fiber or similar coatings वगैरह. What materials do you guys actually offer printing in? So we offer जो सबसे ज़्यादा usage है, that's the ABS and PLA. That's the most commercially available product. इसके अलावा then there are variants of carbon fiber, nylon. तो carbon fiber print हो जाता है? Yes, actually it has some strands of carbon fiber in the thermoplastic. Yes, it's mix होता है, strength अच्छा खासा आ जाता है, but there are ways to actually lay up carbon fiber also, but that's a separate क्या कहेंगे process जो इसमें use हो रहा होता है. और इसके अलावा then there are these industrial thermoplastics like PP, nylon, ASA, ABS, these. So इनकी आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज़्यादा है. यू कैन एक्चुअली यूज देम फॉर इंडस्ट्रियल डाइज, मोल्ड्स वगैरह उनके. सो आपको पूरा यू डोंट रियली नीड टू, इफ़ यू वांट समथिंग डिज़ाइंड या डेवलप्ड, you want just a prototype, एक piece चाहिए, you want like 10-20 of them, you don't really need to have a 10 लाख रुपए की die manufactured. You can just come to us or use a 3D printed. नहीं, 12 लाख का printer ना ले. You can just send us the design files and we will have it 3D printed for you, and that's it. And it would be hardly maybe around 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, that's it. 10 लाख की चीज़ 1,000 में जाएगी? Yes, because you don't really need to get that initial dies or molds वाली जो investment है ना, for to trying a product. नहीं, अच्छा. Yes. So for if you want to make something, ठीक है, you have an idea, आप उसका prototype करोगे, design करोगे. Then to get it manufactured, you have to manufacture a die. ठीक है, that's usually very costly. ठीक है, जो वो बन के आ जाती है, then you can start production.
that is where the cost of that production gets very low, but that actually includes Initial the cost. investment बहुत Yes, ज़्यादा है। initial investment is too high. मुझे याद है, हाँ ठीक है। Yes, quite a few of our customers who actually they had some products. They started in their universities or colleges, their IoT devices. There are few of our customers जिन्होंने IoT devices बनाई. They wanted to test these products in the market. They didn't go the dyes and molds wala way. ठीक है, they just came to us, made some few prototypes, tested their prototypes in the industry, and started making money out of it. Okay, then they grew their business entirely from that. इंटरेस्टिंग। मुझे याद है मैंने एक बार अपना प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए थे, यहाँ भी शायद पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो वो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स थी घर बनाने के लिए, तो उसकी डाई बनाने के लिए इतने ख्वार हुए, इतना खर्चा हुआ कि बस बंदा शुरू ही ना करे काम। Yes, there has been this क्या कहेंगे barrier of entry कह सकते हो। अब तो आप डाई भी बना सकते हैं। You can actually print a die directly. That's it. उसकी there won't be a very, especially I have this thing where I make some concrete products just to explore materials and everything, and mostly we are using 3D printed dies. That's it. You designed your product, had it printed in a 3D printer, simplest FDM printer में print किया, concrete pour करें, and you have the product. That's it. So there are things, possibilities for commercial products and different materials सारी आप यूज़। अच्छा, एक अगर 3D प्रिंटेड सर्विस की अगर मैं थोड़ी बात करूँ कि मेरे कोई कमर्शियली दोस्त कोई पूछ रहा है कि यार मुझे एक चीज़ कब बनाना है, तो मुझे पर क्यूबिक इंच या पर क्यूबिक फीट क्या कॉस्ट आती है? So usually आज के बिजली के दौर में, yeah, so in that case you can't really with your profits and everything. नहीं, with so we charge commercially around 30 rupees per gram. ठीक है, for something that would be 100 grams, so we would be just charging you 30. तो एक ऐसा कप कितने ग्राम का होगा अंदाज़ा? So something like this would be around 100-150 grams. ठीक है, आप 30 रुपये तो 3,000 साढ़े 4,500 में समझ बन जाएगा। Yeah, so in that case आप कह सकते हो कि you will have that prototype to test things. Yeah, that's worth it. An entirely customized thing, obviously. उसकी you can't compare the cost with a commercially available thing, but this would be entirely customized thing and सारी चीज़ें। अच्छा, जो इंडिया हम लोग भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो दो चीज़ों की बात करी। तो आपने बताया कि 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट का रॉकेट बनाया, वो टेस्ट हो गया, तो what kind of you said it opens up a lot of options. What is that feeling for you? Yes, so in that case, so 3D printing और on a larger क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, that is actually additive manufacturing. There are some multiple technologies that are actually called 3D printing and the same thing. उसी में कुछ हैं where the process is very different from what we are currently using for commercial usage or consumers के लिए, where we melt a filament into a 3D product. Then there are these 3D printing technologies where we use liquid material to form 3D objects. Then there is this technology where we use metal powder or a simple powder to make 3D printed objects. So there are ultimate possibilities. 3D printing काफ़ी अरसे से grow कर रही है, and there are जो ecosystem and about the technologies, it has grown into different kind of materials जिनकी बहुत ही different applications हैं. That opens up quite a few possibilities. कह सकते हो even in our case what we do, there are like consumers or our clients that actually make dies, simple dies or cookie cutters for their bakery. Then we have some
clients that actually make their rocket engines or rocket prototypes or drone prototypes from the same technology. So the possibilities are absolutely endless in terms of this technology or the empowerment hai. Like you something like jo ke someone like us, it wasn't available. Okay, now you can actually start making things in gold, precious metals, silver में design करें. You want to give someone a ring, a customized ring है आपकी. You want to make something like that with your initials and something. Just have it 3D लड़की printing. मिलेगी ना प्रपोज करने के बाद आपको बताता हूँ. नहीं ऐसे ही दे दो यार, क्या मतलब है? हैं? ऐसे ही दे दो यार. आपको? मुझे क्यों दे रहे हो? मेरी अरे आपसे बोलो. हाँ. जिस शादी करनी होगी उसको दूंगा ना यार. चलो तुम्हारी मर्जी यार. But the thing being, now you have this opportunity of these endless opportunities. Yes. Where you can actually do multitude of things, from something as basic as a क्या कहेंगे अपना cookie cutters in your kitchen to actual rockets and rocket engines. Cars. I saw people building such different kind of chassis for cars now. Yes. 3D printers, single object में पूरी गाड़ी बना. Yes, there are things where there are these companies that actually use 3D printers to manufacture entire interior out of 3D printers. So, commercially? Yes, commercially. So you can just go to them, ask them to develop a customized interior for yourself, and they will actually design it, 3D printed, have it laminated, and entirely वो leather वगैरह में सारा. Awesome. Very fascinating designs, things, complex designs जो के they were never actually possible before. They were never possible without with any other technology. 3D printing makes them possible. No, so it's very true. How do you see our market? So we still haven't really truly adapted to 3D printing. अभी भी हमें इतना कुछ सीखना है 3D printing. मतलब अभी भी हम लोगों को समझाना पड़ रहा है कि 3D printing होती क्या है. तो while you're sitting in this market, again export opportunity की लोग बात करते हैं, बहुत है, immense है. Where do you see it going in the next few years, globally and in Pakistan both? Yes, so in terms of Pakistan, I see a lot of these businesses, engineering companies, schools, universities using 3D printers for R&D. This will become mainstream, inshallah. This has already internationally, but Pakistan में भी अब ये mainstream हो गया, where universities are now spending on their labs, ठीक है, for getting 3D printers, building vehicle labs and similar stuff, providing these opportunities for the students to think out of the box, चीज़ें explore करें, designs, possibilities explore करें, materials explore करें. So that's one thing. Universities में mainstream हो जाएगा. Then there are these businesses जो कि directly the dies and molds companies, they would be using 3D printers directly to make their low volume production. सारी चीज़ें production की cost काफ़ी कम हो जाएगी relatively with 3D printers. And internationally, these are the things that actually they are slightly, हम कहेंगे 3D printer की adoption ज़्यादा है वहाँ पे obviously. So in most of the Europe and USA, it's quite mainstream now in terms of universities and schools and industries also. Companies are using it for commercially. Relatively Middle East वगैरह में हम देख रहे हैं कि the adoption is getting very rapid now. ठीक है, और इसमें there would be some arts, sculptures, marketing related stuff, वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने लग जाएगा. There would be some 3D possibilities and similar चीज़ें जो कि this would be available to most of the क्या कहेंगे companies and other
individuals who want to explore different materials, different possibilities, different designs. Even concrete 3D printing is getting into mainstream now. और इसी तरीके से there would be quite a few materials जो कि available होंगे that you can actually try, explore, make stuff at your home, start a business, start selling your designs, maybe send them worldwide or similar thing. ये तो ये सोच रहा था कि जिस तरह वो रशा वाला 3D प्रिंटर था, कुछ दिनों में हमारे हीनो ट्रक के पीछे 3D प्रिंटर रखे होंगे, कोई गाड़ी जाएगी रिपेयर करके आ जाएगी रोड के बीच में या कुछ ना कुछ. तो yes, so that's the thing with the 3D printer. It brings that portability of a mobile or portable factory with it. So you don't really need a massive factory to start building or something like that. It has that portable thing with it, और आप उसको कैरी कर सकते हैं. It's not exactly कहेंगे कि हीनो ट्रक पे तो पॉसिबल है, but yes, definitely there would be things that would be actually derived from what we know as 3D printing. 3D printing mobile facilities हो जाएंगी. Yes, it would be used in healthcare, manufacturing, in construction में बहुत ज़्यादा already what we are seeing in terms of houses and buildings that would be getting mainstream. Portable robotic arms and similar stuff जो use हो रहे होंगे 3D printers में to manufacture. So how different are those robotic arms and 3D printers? Okay, so they are not really different. So जो mechanism है about deploying the क्या कहेंगे concrete or deploying the plastic, it's very much the same. It's just the 3-axis motion that's different. Yeah. So with a very basic consumer grade 3D printer, you can actually do 3 axes. So that's 2 axes नहीं होता, ऊपर side. No. So you can go horizontally, you can go back and forth, and you can go up and down. Okay. But with 3D printer वो जो robotic arm उसमें ज़्यादा access होते हैं कि वो तो yes, वो तो कुछ भी कर सकता है. So it has actually quite a few more क्या कहेंगे flexibilities or accesses that is available to it. So that makes a lot of complex designs very easy to manufacture, or you will start seeing those designs in urban centers, housings, sculptures, large scale monuments, और बहुत सारी चीज़ें हमें आपको 3D printing actually नज़र आने लग जाएगी. It's मार्केटिंग में या फिर we start see in GCC बहुत ज़्यादा हम देखते हैं where they have these commercial installations. इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. They have these commercial large scale marketing वाली installations हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो quite a few possibilities. मैं इस साल लीप किया ना, लीप के बारे में पता है ना, तो उसमें जो कॉफ़ी मिल रही थी 3-4 बने हुए थे ये बूथ्स, सिर्फ रोबोटिक आर्म, पूरा बरिस्टा कॉफ़ी ग्राइंड करके उसको कप धोना, सब कुछ करना. Yes. कॉफ़ी तैयार कर पूरी. So सब रोबोट. Yeah, they have been doing that for काफ़ी अरसे से कर रहे हैं. They were at CS also few years ago, but obviously they were not CS making. तो मैं नहीं गया. Yeah, they were not making coffee. वो वहाँ पे they were the bartenders. हाँ, वही बात हो गई ना. Yeah, so that's the thing. That's the manufacturing future. But I would still prefer coffee एक प्रोफेशनल के हाथ से. देखिए, हमें अल्टीमेटली जितना भी हो जाए, आज कपड़े कमर्शियली कितने ज़्यादा बनते हैं, गुल अहमद की फैक्ट्री में बनते हैं. Yeah. लेकिन we still want that artisan feeling and that handcrafted feeling in our stuff, and so bring us closer. So the thing with this technology or 3D printing or any other technologies, it won't be actually replacing the human factor. It will be just enhancing our ability to create. Right. Okay. So I have heard people say, yeah, this will replace humans and everything, but actually what it is doing, or in case of our clients or people who have been using 3D printing, it actually enhances their ability to make.
their ability to think out of the box, to explore things better. वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ और ये भी देखें कुत्ते क्या कर रहे थे ये? अरे वो जो नहीं रोबोट कुत्ता जो भागता है जगह सब कुछ कर लेता है, अच्छा, वजन उठा लेता है। हाँ, वो क्या नाम था उनका, बॉस्टन डायनेमिक्स वाला। कॉफी वाली नहीं मिल रही मुझे वीडियो, बट मिलेगी तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। मैंने अपलोड नहीं करी फिर सोशल मीडिया, लेकिन इट वाज क्रेजी हाउ थिंग्स आर। वो आप उन्होंने क्योंकि एक्चुअल में दिखा दिया ना, वीडियोस में तो बहुत देखा, जब एक्चुअल में आप उससे वो चीज़ लेके कंज्यूम कर रहे हो या वो आप उसको फीलिंग आ रही है। मैं एक कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट गया ह्यूस्टन में, तो मेरा जो वेटर था वो रोबोट था। वो पीछे जाके फ्रिज में सब कुछ हिसाब से रखा, तो जाके तो सामान निकालता था मुझे तो हमें कुछ बता आया ही नहीं, बटन दबाओ रोबोट आ जाए। So it was crazy, and it's just how things are changing. It's phenomenal. It's quite fascinating. And you have to adapt with that. Definitely. Chale, thank you so much for your time. If there's something that you might think you might want to add, वरना तो मेरे ख्याल से मैंने जितना निचोड़ सकता था निचोड़ लिया। Sure, आपसे कोई कांटेक्ट कैसे करे, कोई अगर सीखना चाह रहा है या आपसे कोई साथ कोई काम करना चाह रहा है, या सिर्फ ये सीखना चाह रहा है कि कोई और नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिस हिम्मत के लिए कोई बात करना चाहता है, क्या करें? So I am available as Ali Yousuf on most of the social networks, or you can just search OBJEXYZ, OBJEXYZ, on Facebook, Instagram, on www.objexyz.com, and just get into touch with us. Awesome. Thank you so much. Thank you. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.